Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we are going to cover up criterion number 4, grammatical range and accuracy. Okay, first of all, if we focus uh, criterion number 4, so you can find 2 points. Number one, grammatical range, and the second one, it's all about accuracy. So there are 2 points, not one. This is one, and this is the second one. So we have got two different points here in this case. First of all, let's talk about what I mean by grammatical range and then what actually the accuracy clear it means. All right, talk to me for a while. मुझे ये बताए कि what do you mean by grammatical range and accuracy? Anyone? Anyone among you? मतलब Hmm. Yes, please. ग्रामर ठीक हो और उसमें जो है ना एक Okay. All right. Someone else? Hello. Okay. Let me explain it. Clear? Grammatical range. ग्रामेटिकल रेंज से जो मेरा मतलब है दैट्स वैरायटी ऑफ Sentence स्ट्रक्चर्स. structure. सेंटेंस है Grammar, यस, yes, sentence. अच्छा चीज को समझिए, ठीक है ना. स्ट्रक्चर्स. ग्रामेटिकल रेंज का मतलब ये है कि आपको यू मस्ट क्लियर लर्न, यू शुड नो अबाउट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स. नंबर वन, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स. सेंटेंस स्ट्रक्चर्स. What are sentence structures? You will have four different types of sentence structures. Number one, sample sentences. Number two, compound. Then number three, complex. And number four, compound, complex. These four are the structures. Number one. Number two, structures clear passives. You should know about active and passive. Clear? So passives. Number three, relative clauses. You will study them. Number four, relative clauses conditionals. Number five, inversions. Number six, clefts. Okay, so all of them, we call them grammatical range. Your structures, clear? These are the structures, and these structures gave, like if you use and you know these structures, clear, we call them grammatical range. क्योंकि यही these structures, clear, इसी इन्हीं structure की वजह से मतलब ये बुनियाद है. तो सबसे पहले आप लोगों का एक ढांचा, मतलब जिसे हम ढांचा कहते हैं, क्लियर. तो these structures give क्लियर what ढांचा. तो ये एक ढांचा दे रहा है एक जुमले को. क्लियर. पैराग्राफ में इफ यू वांट टू राइट अ पैराग्राफ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, क्लियर, यू यूज डिफरेंट स्ट्रक्चर. अगर आपके पास सिर्फ और सिंपल सेंटेंसेस है तो इसका मतलब है कि अच्छा यू कांट परफॉर्म गुड. तो कंपाउंड भी होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, पैसिव्स. सो ऑल ऑफ देम. तो फिर इसके बाद जो हमारे पास एक्यूरेसी है, व्हाट गिव्स एक्यूरेसी टू इट? एक्यूरेसी जो है इसका मतलब है सबसे पहले टेंसेस. You must know tenses. Tenses are not structures. Tenses, we call them, it gives a clear accuracy to your structure. Number two, number one, tenses. Number two, for example, articles. Number four, Capitalization. very good. Number three, capitalizations, excellent. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट Very good. Subject verb agreement, superb. Subject verb agreement, excellent. कामा यूज Very good. Punctuations, number five, punctuations. The next,
Number 6, Collocation or academic vocabulary. Singular, plural. singular. Excellent. Singular and plurals. Singular and plurals. If you know them, Claire, तो ये जो पार्ट है ये हम फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एक जुमला लिख देता हूं. लेट मी राइट अ सेंटेंस. Students needs, for example, students needs training. अब इस जुमले को देखिए आप लोग. ये स्ट्रक्चर तो है, स्ट्रक्चर तो है, लेकिन इसमें एक्यूरेसी नहीं है. हेलो. क्योंकि ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद ये Yes. वर्ब है, लेकिन इसमें एक्यूरेसी नहीं है. एक्यूरेसी क्या है कि एक्यूरेसी कैसे आ सकती है इसमें. स्ट्रक्चर तो है लेकिन एक्यूरेसी इज मिसिंग. सबसे पहले एस नीड्स टू बी कैपिटल. स्टूडेंट्स, तो नीड्स की जगह क्या होगा, नीड, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है. तो Need. प्लूरल सब्जेक्ट के पास क्लियर वी डू नॉट एट एस. स्टूडेंट्स नीड क्लियर ट्रेनिंग. और आखिर में क्या होगा, फुल स्टॉप. अब देखिए इसमें स्ट्रक्चर भी है और उसके साथ साथ क्या है, एक्यूरेसी भी. सो बोथ. सो जो जितने भी आप जुमले लिखेंगे सबसे पहले आपके पास वाइड वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, नंबर वन. एंड नंबर टू, क्लियर, दो सेंटेंसेस आर सपोज टू बी एरर फ्री. मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए उसमें. दे मस्ट बी एरर फ्री. बिल्कुल भी वो मिस्टेक्स वहां पे अपने नहीं करना. सो ग्रामर क्लियर दो चीजों पे मुश्तमिल है. नंबर वन, ग्रामेटिकल रेंज, एंड द सेकंड पॉइंट इज एक्यूरेसी. So I've written here the variety of sentence structures, simple, compound, and all of them. Clear what I have written here? Can you see? This is the range. It gives range. And then accuracy, the percentage of sentences with no grammar errors, like articles, tenses, subject, verb, agreement, prepositions, punctuations, singular, plurals. Clear? So all of them, this part. So this is the accuracy. तो हमारे पास दोनों होनी चाहिए. So what I have mentioned here, think of GRI like a driving a car. Suppose range क्या है, the number of gears you can shift through first, second, third and reverse all of them. तो ये मेरे पास क्या है, रेंज है. मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट गियर में कब चलाना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में. लेकिन ये गियर्स तब्दील करना सिर्फ नहीं होता, ठीक है ना. when you want to shift a gear, so how smoothly you drive without crashing. तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट गियर में कब, सेकंड गियर में, लाइक द सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए. और उसमें मतलब स्मूथनेस जो है, कि मतलब ऐसा ना हो कि आप गियर्स तो चेंज कर रहे लेकिन उसमें क्या है, स्मूथनेस नहीं है. एवरीबडी लाइक कम्स टू, जब एक नए ड्राइवर के साथ आप बैठे ना तो आपको पता चल रहा है ना कि ही डजंट नो. गलत गलत जगह पे ब्रेक्स लगा रहे हैं, गलत गलत गियर्स चेंज कर रहे हैं. क्लियर. सो ही डजंट नो हाउ टू ड्राइव. सो when five drivers only use what, first gear. फर्स्ट गियर का मतलब क्या है, ओनली सिंपल सेंटेंसेस एंड स्टिल क्रैश इट. मतलब सिंपल सेंटेंसेस इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन फिर भी उसमें गलतियां बहुत ज्यादा है. बेड नाइन ड्राइवर्स शिफ्ट थ्रू ऑल गियर्स बट स्मूथली. मतलब वो ही नोज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड वो स्ट्रक्चर जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल स्मूथली इस्तेमाल कर रहे हैं. सो यू नीड बोथ रेंज एंड एक्यूरेसी. वन विदाउट द अदर keeps you at band 6. अगर आपके मतलब स्ट्रक्चर्स तो ठीक है लेकिन उसमें मिस्टेक्स है, एक्यूरेसी नहीं है, सो यू विल अचीव 5 बैंड. लेकिन अगर आपके पास क्लियर, इफ यू हैव बोथ, there is no error free sentences you can produce, and you do have clear different structures you can use, so definitely you can achieve high band and IELTS then. समझ रहे आप लोग? हेलो. Yes. Yes, sir. So band 9 secret का क्या है? Band 9 does not mean writing long sentences. It means writing a mix of short and long sentences. It all clear work correctly. A band 9 writer clear uses short punchy sentences after long complex one to emphasize a point. Length does not equal to quality. Control equals to quality. कि आपको कंट्रोल होना चाहिए. आप जो सेंटेंसेस प्रोड्यूस कर रहे, दे मस्ट बी एरर फ्री सेंटेंसेस. यू शुडंट मेक एनी मिस्टेक इन दैट. समझ रहे आप लोग? हेलो. Yes, sir. ओके. इसके बाद हमने क्या करना है,
I'm going to stop the recording here and we will start another video.